हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज थोड़ा हम एनालिसिस करेंगे ये जो 3 वीडियोस अभी जी न्यूज़ ने दिखाया है हमें। वो मैं बता दूं एनालाइज करने से पहले कि ये जो वीडियोस है ये एक्चुअली लीक किए गए हैं। इसका मतलब इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी है। इनको लीक करने के पीछे कोई ना कोई स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मैं देख रही थी कि बहुत सारे चैनल्स में वो सोच ही नहीं रहे हैं कि इनको क्यों लीक किया गया है, क्योंकि रिया के पास बहुत सारे वीडियोस होंगे उसके पास, राइट। तो वो स्ट्रैटेजिकली रिलीज कर रहे हैं। जिस तरह से उनका केस चल रहा है उसके हिसाब से लॉयर रिलीज कर रहे हैं। सो अभी वो जो ड्रग्स के में फंसी हुई है, तो ड्रग्स लेने में फंसी हुई है, ड्रग्स को खरीदने में लाइक फाइनेंस करने में फंसी हुई है, और किसी और के लिए लेने में फंसी हुई है। तो ये बहुत सारे जो भी धाराएं पड़े हैं उसके ऊपर, तो उसके हिसाब से एवरीडे जितना डेवलपमेंट हो रहा है उसके हिसाब से ये लोग रिलीज कर रहे हैं। तो ये जो 2 वीडियोस है ये इसलिए रिलीज किया इन्होंने, ये दिखाने के लिए कि सुशांत डिप्रेस्ड है, बाइपोलर है और ड्रग्ड है। ये दिखाने के लिए उन्होंने रिलीज़ किया। बट इसमें स्टोरी कुछ और ही है। स्टोरी इसको देख के स्टोरी कुछ और ही लगता है। और पहली बात तो मैं बता दूं, ये जो वीडियो मैं पहली बार देखी, ये दोनों वीडियोस, like I really had tears in my eyes. Like I felt so bad for like such a brilliant guy, and the way he looked, or at least the way in what kind of vulnerable situation she's taken these videos. And we don't even know like how many videos जिसमें इससे भी वर्स्ट कंडीशन होगा उसमें ले रहे होंगे। सो पहली बात तो ये पहला वाला वीडियो हम एनालाइज करेंगे। फर्स्ट सिनेरियो ये है कि ये हो सकता है कि इसमें ऐसी मजाक में और बहुत प्यार भरी बातें जैसे एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते हैं वैसा कुछ हो रहा हो। जैसे लाइक व्हेन यू स्पेशली व्हेन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह उठो तो तुम्हारा आवाज़ भी इतना नहीं होता, राइट। आवाज़ थोड़ा दबा दबा रहता है। तो वो एक सिनेरियो हो सकता है कि इस वीडियो में कुछ भी नहीं है, कि ऐसे ही वो फन में बात कर रहे हैं और इसको वो पूरा टर्न कर रही है ये दिखाने के लिए हमें कि ऐसा हुआ है। वो एक सिनेरियो हो सकता है। बट दूसरा सिनेरियो, जिस तरह से वो मैनिपुलेट कर रही है, जिस तरह से वो उसको बोल रही है कि तुम बहुत क्यूट दिख रहे हो, तुम बहुत हैंडसम हो, जिस तरह से वो बोल रही है, वो जो वर्ड्स है ना, जिस तरह से वो बोल रही है वो प्यार वाले वर्ड्स है नहीं। वो जिस उसमें इंटेंशन पता चलता है, उसमें पता चलता है कि वो मैनिपुलेट कर रही है। सो लाइक वो अपने काइंड ऑफ कंट्रोल में ले रही है उसको, ये सब बोल के लाइक प्यार से कंट्रोल में ले रही है। जैसे सब बोल रहे थे ना कि वो ब्लैक मैजिक कर रही थी। ये ब्लैक मैजिक, डोंट टॉक अबाउट ऑल दोस, क्योंकि वो सब हमारा क्रेडिबिलिटी ख़राब करता है। व्हेन यू टॉक अबाउट ब्लैक मैजिक एंड ऑल दैट, वो सब एग्जिस्ट करता होगा बट मैं खुद बिलीव नहीं करती हूँ वो सब में। तो ये ब्लैक मैजिक नहीं है, ये ड्रग्ड वाला मैजिक है। ये उसको ड्रग करके उसको पूरा अपने काइंड ऑफ इतना प्यार देते हैं ना उस टाइम कि उसको पता नहीं चला है। उसके प्यार में वो पूरा डिस्गाइज होके सब कुछ कर रही थी। तो एंड वो जो प्यार के इतने भूखे होते हैं उनको पता नहीं चलता है, वो ऐसे ही उसके अंदर चले जाते हैं। जैसे इफ़ यू रिमेंबर, कंगना के इंटरव्यू में भी कंगना ने जिस तरह बोला था कि वो क्यों ड्रग करना शुरू की, राइट। उसको ड्रग इंट्रोड्यूस किया गया और वो उसके साथ एक रिलेशन बन गया उसका, और फिर दोनों लेते थे। फिर वो कंट्रोल करने लगता है उसको, एंड वो भी उसमें लाइक डीप होने लगते हैं, वो भी चले जाते हैं उसके नीचे। सो दैट इज़ हाउ इट हैपन्स, बिकॉज आफ्टर दैट दे बिकम एडिक्ट्स, राइट। जो यहाँ पे बैकग्राउंड है, इफ़ यू सी दिस, ये एक्चुअली किसी ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि ये उनका फार्म हाउस जो है जो कि पुणे में है, वो बैकग्राउंड है ये। कान में दिखाओ, तुम्हारे कान किस कलर के हैं? तुम किस कलर के हो? सी इसमें वो जो बोल रही है ना, व्हाट कलर इज़ योर ईयर, वो पिंक बोल रहा है। तो ये यहाँ पे ना ये भी हो सकता है कि अगर वो सुबह सुबह उठे हो तो यूजुअली जैसे सुबह सुबह के टाइम में थोड़ा सा
वो सन में बैठो तो तुम थोड़ा सा ऑरेंज पिंक ऐसे दिखते हो, राइट? तो वो भी हो सकता है कि वो ऐसे ही उससे पहले जो रिकॉर्डिंग कर रही है, जितना रिकॉर्डिंग दिखा रही है उससे पहले वो ये भी बोली हो कि अरे तुम्हारा ईयर्स को देखो कितना पिंक लग रहा है, तुम्हारा फेस कितना पिंक लग रहा है, ऐसा कुछ तो बोली होगी। तो उसके बाद फिर वो पर्पसली उसको पूछ रही होगी कि अरे तुम्हारा ईयर क्या कलर है, तो वो पिंक बोल रहा है। सो बेसिकली उसको शायद दिमाग में वो डाली होगी, क्योंकि इट्स जस्ट ए नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, जैसे हम बात कर रहे हैं। तो तुम खुद अगर उसको कुछ बोले होगे पहले कि जिसका रिकॉर्डिंग तो है नहीं, ये रिकॉर्डिंग तो यहाँ से है जहाँ से वो पूछ रही है, नहीं तो वो ऐसे क्यों बोलेगी कि अरे तुम्हारा ईयर दिखाओ, लाइक इस तरफ टर्न करो करके क्यों बोलेगी? तो ये भी हो सकता है कि उसकी वजह से वो ऐसे बोल रही है, इसलिए वो बोल रहा है कि हाँ पिंक, क्योंकि वो ऑलरेडी वो वर्ड उसको बोल चुकी है। तो इसीलिए वो भी ऐसे ही रिप्लाई कर रहा है कि हाँ पिंक कैसे दिख रहा है, पिंक दिख रहा है। सो आई थिंक लाइक दिस रियली नथिंग abnormal there. That seems to be like a normal reaction that he might be giving because of something she would have told earlier, which is not in this video. So that is possible too. But also this video shows how strong he is, because इसमें क्या कर रहे हो तुम? लॉरेल, अभी तुम हारे ना लूडो में, झूठ क्यों बोलते हो? So see, he's talking normal. He knows what he's doing. He's talking about कि लूडो खेल रहे थे और मैं तो 2 बार जीता हूँ, ऐसे सब बोल रहा है. So it's not like he's like lost it or anything. It's not. He knows what he's reading, and ऐसी हालत में भी you can see how strong mindset he has that he's reading that book. It's just that उसका जो बिहेवियर है वो ऐसा दिख रहा है कि शायद थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस में है करके. And then the way she says cute, handsome, if you notice in both the videos she says that, in this video also, the other video also. So let's listen further now. लेकिन अभी मेन गेम तो यही था, टीम अप वाला. So 1+1 to 0. नहीं बाबू, तुमने आपको 0 नहीं बोलते, अच्छा थोड़ी लगता है. तुम हीरो हो बाबा. So here again he's putting the logic so right, because he is telling, as soon as she told कि ये तो team up करके हम खेल रहे थे, so basically she's trying to say if we were teaming up and playing we should have like won it. So for that he's answering very logically, trying to say that no, 1+1 is 0, which means he's trying to say if you team up and play, that doesn't mean you're going to win, you can be 0 too. And then there is also another reason that 1+1 is 0, it's like binary numbers. वो मुझे भी इतना नहीं आता, but there is like something very intellectual जो बाइनरी नंबर्स का होता है, वो 1+1 = 0 होता है, और उसका एक पूरा एक इक्वेशन है, वो मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगी यहाँ पे. He knows that, right? Because he knows that, he is just connecting it as a logic here कि हम टीम में क्या खेल रहे हैं तो क्या हुआ, तो 1+1 टीम में भी खेले तो भी 0 हो सकते हैं. So that is what logic is putting here. So which is so smart. His brain is working fine even in all these situations, because he is not giving up. वो दिखाता है कि he is not giving up. That means he purposely is not taking any kind of drugs. The drugs have been given to him unknowingly. What kind of drugs or medicines were given to him, that is something only Rhea will know, because there might be a lot of things that can create hallucinations or make you all stressed and depressed, those kind of things. Even antidepressants can give you depression. So there are a lot of things that she could be doing alongside, giving him prescription medicine, that could be creating lot of, like, क्या बोलते हैं वो, हलचल create कर रहा है, but he is fighting through it, because every video you see something that you see that his smartness still comes through, his intelligence still comes through. So, and then here she tries to say like, no, you're not 0, you're hero. इसको तो समझ में ही नहीं आ रहा है वो क्या बोल रहा है. First of all, she's relating that 0 that he said to him and trying to say no, you're not 0. Like, this is kind of the same logic that she had told Smita Parekh about, that she always tells him that तुम suicide तो create नहीं करोगे. So she puts indirectly, by telling you're not this, you put that in the head.
So that is what she's trying to do here. And then that पापा को भेज दोगे, that also the reason she's telling is because वो अपने like fun में ना उसको ऐसे book मारने की action कर रहा है, right? So I think that is why she's telling कि मैं इसको पापा को भेज दूँ. That means she's trying to say कि मैं अपने पापा को भेज दूँ. I don't think she's talking about the drug, because I don't even think he knows that in this video, and they're taking this video, he doesn't know that he's drugged or something. She wanted us to think that. That is why इतना वीडियो भेजा जिसमें वो बोल रही है पापा को भेज दूँ. Because she wants us to think that she's talking about drugs. Whereas she's not. She's not talking about drugs. वो जो एक्शन किया उसने वो बुक फेंकने का, उसके लिए वो बोल रही है कि मैं पापा को बताती हूँ. तो काइंड ऑफ टेलिंग कि अरे मुझे क्यों मार रहे हो, मैं पापा को बताती हूँ, समथिंग लाइक दैट. सो दैट इज व्हाट. सो बेसिकली ना ये वीडियोस ने जो भी वो कर रही है ना, या जो भी उसका लॉयर कर रहा है, वो पूरा उल्टा बैकफायर ही हो रहा है. इसलिए वो इतना ही बेचते हैं जितना उनको रिलीज करना है. सो दिस आई थिंक दिस दैट इज व्हाट दिस फर्स्ट वीडियो शोज. Let's analyze the second video now. Now this second video is what actually I felt really emotional when I saw this, because it was painful to see him like that. And this is where I want to reveal you something else too. So let's watch in this video. First of all, there's a big doubt of why she's recording all this, right? First video to chodo ye video. In this video also focus and see how she tells that you're cute, handsome. She says the same thing. एंड मुझे क्या लगता है ना, वो जो कंगना का आपने देखा होगा, एक मैनिपुलेशन का ना एक मेथड होता है. सो हर मेथड इज लव. शी इज़ यूजिंग लव, एंड शी ऑलवेज एम्फोसाइजेस आई लव यू, एंड लाइक टू मच ओवर प्यार दिखा के ना एम्फोसाइज करके अंदर लेना. शी नोज, एंड दैट इज़ व्हाट शी इज़ यूजिंग एज हर वेपन. लाइक every time कुछ भी हो, शी इज़ लाइक सेइंग द same kind of things, like just praising him all the time, like on the camera. Like you would never have seen, you might have seen so many videos of Ankita and him who were 7 years they had relation, but I don't think on camera you will not see them like talking like that. I mean, it's different that we are not seeing their personal videos, but still कैमरा के सामने इतना कोई सेम चीज़ नहीं रिपीट करता. और अगर आपने देखा होगा, जैसे कंगना was telling, that phrase of the black cat in the dark room. Remember that? Like, find the black cat in the dark room. Basically, like, when they are trying to take drugs or something, and they are using this phrase so that it sits in the mind, so that it is something that when you're trying to find a black cat in a dark room, you're not finding anything. So basically you feel like you're floating, hallucinating, whatever. I've never taken drugs, but I'm just like trying to analyze it, that is why they try to keep such phrase in their mind or repeat such things. Same thing, I feel like this is her manipulation words every time, like you're so cute, you're so handsome, like her tone is like that. So let's watch this video. You look very cute. You're very handsome. See, same things. Same thing. It's like she's using the same phrases to kind of control him. She's using the same phrases, and as soon as she tells that, he kind of goes into this, he kind of submits himself into her. Like, see, that's what he's doing here. He's getting emotional because as soon as she tells that, you become like, he's very emotional thinking about that. Oh, there's somebody who loves me so much, because nobody loves me. See, it is like when you have a drink. I never drink, so when I have even like 2 sips of wine or something, you become very emotional. You might cry, you might cry 1 second, you might like laugh 1 second, because you become emotional. If you have anything that's in your subconscious mind, then it comes to the surface. So you start thinking about that. So you will know what's going on, but you will still be thinking about those things. You are very emotional when you are under influence, right? Same thing has happening to him. So that is one thing that he might be reacting that way. Or another thing that he might be reacting that way, I'll tell you. This says it is February 2020. I think ये झूठा है, क्योंकि ये फरवरी का नहीं है. क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो जहाँ पे वीडियो एक्चुअली लिया गया है,
ये रिया के घर का वीडियो, रिया के घर में लिया गया। और रिया के घर में वो कब थे? I think after the Europe trip. After the Europe trip, before they moved into the house, I think he was staying here with them for a while, and then he was staying in that Waterstone resort or something for a while. So I think this is when he probably had dengue. That is again, if we trust her, that he did have dengue. किसी को पता नहीं है did he have dengue or not. But if you trust that actually उसको डेंगू था, तो फिर उस टाइम का हो सकता है. Maybe that is why he is looking this weak, and maybe it is not even just the drugs. It's also that he's also become weak because of being sick, right? And he's staying in their house. And अगर वो बात भी है तो then ये सवाल भी उठता है कि if he was in that condition, what was their parents doing, right? Why didn't they think like he was in a bad condition then? So all these things come up. So basically वो जब भी कुछ रिलीज करते हैं उनका उल्टा ही पड़ता है. तो मुझे नहीं लगता है फरवरी का है, बट यू नो हु नोस. That is something only CBI can verify. So, and also there's one thing that we watch in everything is that इन दोनों वीडियो में कि उसका जो लेफ्ट गाल देखो, लेफ्ट गाल में is very darker. Now he's going to remove his hand. Even in the other video you see it very clearly. See this face here is very dark. It's like bruised kind of. This side नहीं है, this side है, which is very strange. In दोनों वीडियो में if you see his face, see this, it looks like bruised, kind of that greenish, you know, and here also it looks like greenish. या प्रीवियसली मैं सोच रही थी वो बियर्ड का दिख रहा है, बट बियर्ड का नहीं है. आई सॉ वेरी केयरफुली देन यहाँ पूरा लग रहा है. सो वी डोंट नो, लाइक इवन इफ लाइक दे वर ड्रगिंग हिम एंड someone who is not used to certain kind of drugs or anything, अगर उसको कुछ रिएक्शन हो रहा होगा, वो अनकंट्रोलेबल हो रहा होगा, राइट? बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर पिटानिया ऑल्सो यूज टू से कि नहीं वो कंट्रोल में नहीं रहते थे, ये तो क्या रिया है जो उनको कंट्रोल कर सकती थी. ये जो बोल रहा है ना, उससे मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि इसको यहाँ लाइक असॉल्ट भी किया हो. यू डोंट नो, बिकॉज व्हेन ही इज इन दैट काइंड ऑफ कंडीशन, लाइक व्हेन दे टेक हिम इन टू दैट kind of condition where he is wanting drug, because you become a drug addict, then you will want, right? So when you're not getting it at that moment, जो एक period होता है, तब you might be, it might be hard to control you. So उस period में अगर वो उसके साथ कुछ किए होंगे, या if they're like hitting him, slapping him, whatever to calm him down, right? उसको भी याद नहीं होगा, उसको भी शायद वो याद नहीं होगा, बिकॉज वो सोच रहा होगा कि ये मुझे कंट्रोल करने के लिए, ये मुझे संभालने के लिए कर रहे हैं. बट दैट कैन लीव सम मार्क्स. तो वो भी हो सकता है, यू डोंट नो. एंड ही माइट नॉट बी सेइंग दैट बिकॉज इन हिज माइंड ऑल्सो ही माइट बी थिंकिंग दैट जस्ट हेल्पिंग हिम, और ही माइट बी इन सो मच ऑफ इन्फ्लुएंस एट दैट मोमेंट दैट ही डजंट नो व्हाट दे आर डूइंग. So anything is possible. It's exactly goes with the narration that Kangana was talking about, that kind of situations that happen around that time when you are in the influence, when you are taking those kind of things, right? So that is kind of my analysis on these two videos. I will do the analysis on the third video also. But really it is so sad to see this, but also to see that how much he was fighting. Like internally his mind was fighting it, but I don't think he knew that they were like drugging him. And if you were drugging somebody unknowingly, right, for some time, and then you start feeling like depressed, and then you start hallucinating or whatever, and then you start telling your girlfriend that, you know what, I'm feeling this, I'm feeling that, because he's trusting her. And then she tells, oh, you know what, you might have this problem, you might have that problem, let's take you to the doctor. At the same time, don't forget that at the same time she's already spreading it to Bollywood, because the news had already gone to Bollywood. The day he died, everybody knew he's in depression. So that means before that itself, for months they knew something was wrong. So, and how did they know? They can only know from her. She was the contact with him. So she had already like kind of staged it in that way, that by the time something happens, by the time he dies from some overdose, like people will know that he was a druggie, right? But it just didn't happen like that, because by the time that June happened, Disha died,
lot of things like just went, everywhere, and that's why probably they had to kill him early. But otherwise, maybe their plan was like that. That is why in earlier videos you see her telling that, oh नहीं हम लोग गोवा जाएंगे कुछ टाइम वहाँ देखेंगे. She's trying to force her thing on him that we'll go to Goa, not like somewhere else. But गोवा में देखेंगे पहले 2 महीना कैसा रहेगा, and then you can decide. She's telling. Why is she telling? Means she planned in her head. इसका तो वैसे भी पैसा खत्म कर दिया हमने, तो नेक्स्ट अभी गोवा ले जाऊंगी तो गोवा में वैसे भी ड्रगी बना दूंगी, तो वहाँ कोई कहीं ओवरडोज होके मर जाएगा. So it's okay. Like she didn't care. So I think personally, I know I'm blaming so much on her, but I am also at a point now that I don't mind saying that she was, even if not directly, she was indirectly, obviously linked to this murder. Obviously, she also knew that he's going to die. And I believe that now, just because of so much, all the proofs that have come out. Otherwise, I will never talk about somebody like that. For a few months, actually, for almost 2 months, I was giving benefit of doubt to her at every step, thinking that, okay, she may not know this or she may not know that and all that. It's only that recently I started believing that she was actually planted in his life. I started believing that only recently, and that's when I have really started going against her. So anyway, guys, thank you for watching. You guys tell me what you think of it. And let's all pray for his soul to rest in peace. So let's hope that CBI does their job good. So far that it's going good. Bye, guys. Hi guys, I'm going to analyze the recent video that came out today. Now, always don't forget the intention of why this video was leaked at this point, because they released 2 videos. That was to prove that he was in depression, that he was mentally unstable, because that's why they released such kind of videos. All lawyer strategy going on right now, because Z News is not having some investigative team जो जाके कहीं से videos निकाल रहे हैं. नहीं, उनको ये वीडियोस मिल रहा है क्योंकि सतीश मानशिंदे इज रिलीजिंग दिस वीडियोस वन बाय वन अकॉर्डिंग टू द वे द केस इज गोइंग ऑन. सो ये वीडियो अब क्यों रिलीज हुआ? नाउ द लॉयर इज शिफ्टिंग टू अ पॉइंट वेयर he doesn't care if the people say that she was using it. Now they just want to prove a point that Sushant was using it on his own. And why do they want to prove that point? Because वो पॉइंट अगर प्रूव करेंगे तो वो जो अबेटमेंट टू सुसाइड जो होता है वो एंगल उसका वो उस एंगल से बच जाएगी, क्योंकि अगर वो उसको ड्रग्स नहीं देती थी, वो खुद ले रहा था, तो फिर अबेटमेंट टू सुसाइड कहाँ से आएगा? नहीं आएगा. दैट इज द मेन इंटेंशन ऑफ दिस वीडियो. सारे न्यूज चैनल्स इसको दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये देखिए दोनों लेते थे. सो दे आर स्ट्रेसिंग ऑन द फैक्ट दैट अरे ये तो बोल रही थी कि मैं नहीं ले रही थी, बट ये तो यहाँ ले रही है. But that is not a breaking news. The main intention of them sending this video is to also show that Sushant also was taking. And ये सारे न्यूज़ चैनल्स वही कर रहे हैं जो सब चाहते हैं. मैं जब इस वीडियो को देख रही हूँ, मुझे नहीं लगता है कि वो जो ले रहे हैं वो ड्रग्स वीड वो कुछ नहीं ले रहे हैं. वो कुछ तो हर्बल कुछ ले रहे हैं. मुझे लगता है वो हर्बल वाले सिगरेट्स भी बहुत मिलते हैं, वैसा कुछ ले रहे होंगे. या फिर जैसे इसमें सैमुअल बोलता है कि टोबैको है इसमें करके, तो टोबैको का ले रहे होंगे. इसमें कहीं पे भी कोई नहीं बोल रहा है कि ड्रग्स. ओनली रिया इज द वन जो बोल रही है रोल्ड सिगरेट. वो पर्पसली वो चीज़ बोल रही है, पर्पसली. एंड अनदर थिंग आई विल टेल यू अबाउट दिस वीडियो. यहाँ पे सुशांत है, रिया है और पिटानी है और सैमुअल हकीब है, और पीछे शायद वो आनंदी है, शायद जो बैठी है, क्योंकि उसके बाल से लग रहा है कि वो शायद आनंदी है जो उसके टीम में थी. इफ सैमुअल इज इन दिस वीडियो, दैट मीन्स दिस इज अ वेरी ओल्ड वीडियो. दिस इज अ वीडियो बिफोर June 2019, बिकॉज सैमुअल लेफ्ट अराउंड दैट टाइम. सो दिस इज वीडियो वॉज बिफोर दैट, एंड दिस वॉज वेन after he broke up with Sarah Ali Khan, and then she had come into his life, right? So this was kind of their new relationship. That is why इस वीडियो में अब सुनोगे तो ये बोलेगी आई लव यू, बट ये आई लव यू नहीं बोलेगा. ही जस्ट सेज आई होप सो. तो इट्स नॉट दैट ही डिडंट लव हर. आई गेस एट दैट टाइम ही डिड लव हर, बट ही वाज नॉट लाइक ओवरली शोइंग इट एट दैट टाइम, बिकॉज दिस वाज अ न्यू रिलेशनशिप, राइट? एंड
if I remember Samuel Huckup, or I don't know how to say the last name, but he is actually helping CBI to get to the matter. And इसके हिसाब से at that time there was no issue of drugs, depression, nothing when he was there. So basically after he has left only all that has happened. So this will be a guy who can answer कि ये लोग ले रहे थे ये क्या सच में ड्रग्स था या नहीं. इसमें तुम देखोगे तो वो फूंकने के बाद यू विल सी कि वो थोड़ा खांस भी रहा है एंड ऑल. एंड दैट इज़ द रीज़न दे आर रिलीजिंग मोर एंड मोर वीडियोज़ जिसमें ये सिगरेट पकड़ा है. तो सिगरेट तो हमेशा वो पीता था, राइट. सो बेसिकली व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग इज आई थिंक दे स्टार्टेड मूविंग हिम टू दिस रोल्ड थिंग. एंड व्हाई डिड दे मूव इन टू द रोल्ड थिंग? देयर इज़ अ प्लान देयर टू, बिकॉज वंस दे मूव इन टू द रोल थिंग देन उस रोल के अंदर कुछ भी डालेंगे इसको पता नहीं चलेगा, राइट. सो दैट इज़ वाई बहुत प्लान करके की है, जिसमें मुझे खुद सरप्राइज हो रहा है कि मैं क्या क्या सोच रही हूँ. लाइक आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग लाइक क्रिमिनल टू थिंक कि वो क्या सोच रही थी. वॉच द वीडियो नाउ. सी इसमें भी वो क्या बोला, वो बोला टोबैको, ये बोला टोबैको, ये बोल रहा है ऐसे ही फन कर रहा है कि नहीं नहीं ये तो हर्बल, ये नहीं, ये मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, VFX effect is just making fun. Look at the second sentence she says. After again her appreciation for him starts here again. She's like, she said so funny Baba, I love you. So इतना जब उसको पता है कि रिकॉर्ड हो रहा है तो इतना लाइक एम्फोसाइज करके उसको बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है. बट शी हैड टू डू दैट बिकॉज शी डिडंट रियली लव हिम. Because she didn't love him, she had to tell him 100 times, I love you, or do all those things, you're cute, you're handsome, ye wo, to keep him in control, kind of, to keep him like submitted to her. It is like when you can see how childish she acts, right? Her childish act. Actually, I had fallen for it too, because initially मुझे याद है जब उसका एक वीडियो रिलीज़ हुआ था वो जो ताई वाला, तो मैं मीडिया को डांट रही थी कि मैं बोल रही थी ये क्या है, ये तो ऐसे ही फन कर रही है, वो ताई वाई जो भी बोल रही है. एंड मुझे वो बहुत क्यूट लगी थी तब. मुझे लगा था ओ मे बी दिस इज़ व्हाट सुशांत सॉ इन हर, बिकॉज सुशांत वॉज लाइक ए चाइल्ड, राइट. एंड दैट इज़ व्हाट इज सॉ इन हर, बिकॉज हर बिहेवियर इज़ वेरी childlike and childish, and she's always making fun and talking like that. So then that is what I thought, that is what he would have fallen for. But उस बिहेवियर के पीछे क्या था उसको पता नहीं था, वो हमें खुद पता नहीं चल रहा था, राइट. ऑन द स्क्रीन आई ऑल्सो फेल्ट लाइक दैट, शी इज़ जस्ट मेकिंग फन, ये क्यों उसको इतना बुरा दिखा रहे हैं, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था. बट दैट इज़ अ बिहेवियर दैट्स ड्रॉन हिम टू हर, बिकॉज ही थॉट अरे ये तो चाइल्ड लाइक है. शी इज़ acting the way he wants her to act, basically. Even if they're taking any kind of things like marijuana, something that's not like once in a while if you take, it's not like you're going to get depressed. So if for fun they're just taking that, also this does not amount to anything with depression, bipolar or whatever, nothing. It doesn't amount to anything. Don't fall for this. Don't agree until we have proof that he was taking it. This is not a proof, okay. In this also we don't know what was in the rolled cigarette. The only person who says that it's rolled cigarette is Rhea in this. And remember, she could have taken advantage of that habit that he has of smoking cigarette and then moved him slowly to this rolled kind of cigarette, telling कि अरे ये हर्बल है, ये marijuana का थोड़ा लेने से कुछ नहीं होगा. She could have moved him slowly to that kind of rolled thing, because that would pave path to her, so that next जब वो करने लगेगी कुछ तो फिर वो हार्ड वीड्स कुछ भी उसको यूज़ करके देगी तो शायद उसको पता नहीं चले, राइट. सो शी वॉज मेकिंग हर वे इन टू इट by moving him to something else. That's what I feel. This is a very old video, guys, so remember that. So this is a very old video when she was new. So maybe उसका प्लान तभी तक शुरू भी नहीं हुआ होगा कि इसको क्या क्या करना है. वो बाद में उसका लाइफस्टाइल देखी होगी, सब कुछ देख के धीरे धीरे शुरू किए. एंड वॉट एवर शी हैज़ डन आफ्टर सैमुअल हकेप वॉज आउट ऑफ द पिक्चर, बिकॉज इसमें सैमुअल है. सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड एंड डोंट ट्राई
to help spread the thing that he was also taking drug. No, this video does not prove that. So get that straight in your head. This does not prove that. Just by him showing that he's smoking something does not mean anything to us. So let's not take it for that until we have proper proof, because that is going to take her, remove her from the abatement of suicide, and that is what the lawyer wants right now. Bye guys, see you in my next video.